Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Textbook Super Coaching. I hope all of you are doing really well on the Republic Day Eve. आप लोगों ने president का भी address सुन लिया होगा. How we were able to see that Madam Draupadi was trying to ensure that they were addressing a nation who's going to be on the eve of Republic Day, preparing for Republic Day tomorrow. Good evening, everybody. Diksha, Debashish, Simar, Prajita, Fatima. Wilfran Dias. Wow, that's a beautiful name, Wilfran. All right, without further ado, let's just very quickly get started. जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे. आज आपका MPPCS हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे. We will be covering a few questions जो कि आपके MPPCS एग्जाम से रिलेटेड हैं. और जैसे कि मैंने आपको इस हफ्ते सिलेबस बताते हुए कहा था कि काफी सारे जो टॉपिक्स MPPCS इंग्लिश के पेपर में आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आते हैं, उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो के फॉर्मेट में करेंगे. तो आप जैसे ये लाइव क्लासेस हैं वैसे ही वीडियो सेक्शन में मैं कुछ आपको टॉपिक्स बताऊंगी जो इवन आपके नेट के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जस्ट वेरी क्विकली डाइव इनटू लुकिंग एट द क्वेश्चंस. कल भी आपकी मास्टर क्लास है, तो आई होप आपको ये चीज याद रही होगी कि टुमारो ऑल्सो यू आर हैविंग योर मास्टर क्लास. आपका जो मास्टर क्लास की टाइमिंग्स है वो आपको टेक्स्ट बुक के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा. नीरजा मैम टेक्स्ट बुक पे आपको वो मिल जाएगा. प्लीज इंश्योर कीजिएगा दैट ऑल ऑफ यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि कल हम लोग दोनों की दोनों क्लासेस में जो रिपब्लिक डे पे हम लोग कर रहे हैं विल बी कवरिंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो इंश्योर कीजिएगा दैट ऑल ऑफ यू आर देयर. फाइन. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क्स. गुड इवनिंग सोनाली. गुड इवनिंग बच्चे. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. चलिए देरी नहीं करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं. लेट्स जस्ट वेरी क्विकली मूव अहेड. कल की क्लास इसके अंदर स्केड्यूल के अंदर आपकी नहीं दिख रही है, बट ये आपके अभी अपकमिंग जो मास्टर क्लासेस का स्केड्यूल है जो हम जनवरी में फॉलो करेंगे. कल भी 26 को 12 बजे एज वेल एज 1 o'clock, 12 बजे एज वेल एज 1 o'clock हम लोग मिलेंगे. वी विल बी प्रैक्टिसिंग योर वर्कशीट प्रॉपरली. ठीक है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. ऑलराइट, या यू कैन वॉच द मास्टर क्लासेस. मास्टर क्लास का लिंक भी आपको टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे दिया जाता है. तो अभी भी जैसे आज हम लोगों ने काफी सारे जो क्वेश्चंस थे वो पोएट्री से रिलेटेड करे थे, जैसे लेडी लैजरस, राइट. तो वो सारे क्वेश्चंस थे. और अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो काफी हद तक क्वेश्चंस जो हैं आपके दे विल बी कोरिलेटेड, दे विल बी रिलेटेड टू योर पोस्ट कॉलोनियलिज्म. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड. आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है. The poetry collection Orion belongs to which of the following Indian poets? कौन से Indian poets ने ये poetry collection Orion लिखी है? So Orion is associated with which Indian poet? ओरियन जो है इंडियन इंग्लिश पोइट्री, प्लीज एक बार अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देवशीष, there will be master classes in February, बट थोड़ा सा उनका डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एंड टॉपिक्स जो हम लोग कवर करेंगे वो भी आपका थोड़ा डिफरेंट रहेगा. Yes, absolutely right, absolutely right. Devashish ने सही जवाब दे दिया है. जामिर ने भी सही जवाब दे दिया है. It's KK and Daruwala. So here, what are you able to see? KK and Daruwala is the person who's writing Orion. Orion जो आपका work है, वो कौन लिख रहा है? Orion आपका work KK and Daruwala लिख रहे हैं. So KK and Daruwala is the person associated with Orion. Orion is the collection that we are primarily talking about, जो कि आपकी KK and Daruwala से associated है, right? Now please remember, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. You should be well aware about it. So under Orion, KK and Daruwala important. Nizam Ezekiel भी of course important है. तो Indian English Poetry जो आपका यूनिट है, Indian English Poetry जो आपका पूरा यूनिट है, इसके आपके पास स्पेसिफिक नोट्स होने चाहिए. आपको इंडियन इंग्लिश पोइट्री की डेवलपमेंट पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट जो आपके राइटर्स हैं इंडियन इंग्लिश पोइट्री से एसोसिएटेड उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, केके एंड दारूवाला इज राइटिंग अंडर ओरियन, राइट. सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. इनकी जो पोइट्री इट फाइंड्स इट्स ओन फॉर्म, दैट इज अ ब्लेंड ऑफ फ्रीडम एंड डिसिप्लिन दैट यू आर एबल टू सी. और ये सारे दम मॉरिस, के रामानुजन, निज़म एज़ेकिएल इंडियन इंग्लिश पोइट्री के इंपॉर्टेंट स्टॉलवर्ड्स हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग नाइजीरियन नॉवेल्स रिवॉल्व्स अराउंड अ स्पिरिट चाइल्ड who can move back and forth between the human and the spirit's world? Beautiful work that we are talking about. What is the right answer over here, everybody? What is the right answer over here? ये किसने लिखा है, किसका वर्क आ रहा है? Who's the writer who's writing this particular work? Who's the writer who's writing this particular work? जल्दी से बताइए. So when we are looking at
this particular work, who is the writer who is writing this, who's the writer who's writing this altogether. ऑल्सो शेयर्ड, आपका अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेजा भी हुआ है, मैंने भेजा भी हुआ है. यस, द फैमिश रोड इज द राइट आंसर. वेरी गुड सोनाली, एब्सोल्युटली राइट. फैमिश रोड अजारो की स्टोरी बताता है, who's a अबीकू, अबीकू, you know, the spirit child that you are able to see. Very touching tale by Ben Okri that you are able to look at. ठीक है, so here this is Ben Okri's The Famish Road. बाकी words भी आपके important है, हेलोन हबीला का Waiting for an Angel, एलोन पेटन्स क्राई द बिलवेड कंट्री. हम लोगों ने याद है अभी कुछ इसी हफ्ते जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे उसमें भी एलोन पेटो का वेट वर्क आया था. चिनू एचपी ऑफ कोर्स, यू नो, द एंथल्स ऑफ सवाना, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क्स लाइक थिंग्स फॉल अपार्ट, देयर ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट वर्क दैट एक्चुअली इज राइटिंग. तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी. यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड. So the famished road, the famished road is the work, the famished road is the work, ठीक है, that you are able to see. This is the first book in the trilogy that we are able to look at. Songs of Enchantment, Infinite Riches, telling you the story of Azaro, the spirit child, traveling in Nigeria. आप प्लीज अपने अफ्रीकन लिटरेचर के जो नोट्स बना रहे हैं, पर्टिकुलरली नाइजीरियन राइटिंग्स में, उसको आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं. गुड इवनिंग रवि, गुड इवनिंग. Azaro is pressurized to leave the mortal world, right? But he's saying, no, I want to come, I want to be born, and I want to stay to change the fortunes of this family. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर देख पाते हो. फैमिश रोड वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिश रोड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेन ऑफ बेन ओक्री. एंड इसको बुकर प्राइज भी मिला था. तो आपके जो बुकर अवार्ड विनिंग वर्क्स हैं, बुकर अवार्ड विनिंग राइटिंग्स हैं आपकी, राइट, इनको भी हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स बुक कोचिंग पे भी एक थोड़ा सा इनिशियल बुकर अवार्ड का करा था, तो उसको भी आप एक बार देख लेना. Who kills religious frantic and violent patriarch of the Achiki family in Adichi's purple hibiscus? Adichi का जो purple hibiscus है, कौन यहाँ पर आपकी फैमिली को मार रहा है? Who's the writer that we are talking about? Who's the writer that we are talking about? Who's killing this religious frantic? Purple hibiscus, very important. Adichi is also Nigerian writer. Adichi भी आपकी Nigerian writer है. Okay, so यहाँ पर when we are talking about purple hibiscus, what is happening over here? I want all of you to tell me about purple hibiscus. So when we are looking at purple hibiscus, right, by Adichie, what is the basic summary that you are able to see? What is the correct answer over here? It's a post-colonial novel telling you about gender, identity, violence altogether. ठीक है, and यहाँ पर ना नॉवेल के एंड में कम्बीली is strengthened by her culture, right? That is another important point that you are able to actually raise. But आपका यहाँ पर when we are talking about killing, what is the correct answer? What is the correct answer? Yes, 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 absolutely right, absolutely right, absolutely right. So यहाँ पर what are you able to see? You are able to see that कम्बली का जो central character है, okay, and overall जो killing हो रही है, that killing by wife Beatrice, you know, that is another process that you are able to see, because you know, this is what is coming in. तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी about this entire work, right? About this entire work that you're largely able to see, because a lot of times when these kind of questions are coming in, आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा. No worries, Ravi. No worries at all. No worries at all. So how you are able to see that, you know, this particular work which is coming, यहाँ पर पूरी की पूरी story जो आपकी आती है of Purple Hibiscus, you are able to see Kambli's character, right? Kambli का जो character है aged 15, okay, Kambli Adichie का जो पूरा का पूरा character है, that you are able to see. Eugene is both religious and a zealot altogether, and you know, wife Beatrice को subjecting always towards victimhood. So Kamli herself and her brother Jaja, you know, to beating and psychological cruelty. और अभी हम लोगों ने ये कहाँ पर पढ़ा था, स्टीफन क्रेन का, even when we were talking about Maggie, a girl in the streets, हम लोगों ने क्या देखा था, मैगी को भी she was subjected to parental abuse because of her alcoholic parents. Her brother was also there. This is what we had talked about. I hope you were able to remember that. And कमली की आइज से, कम्बिली की आइज से आपको पूरी की पूरी स्टोरी पता चलती है. You know, you are able to see that.
And you know what is interesting is that our brothers spend, at the house of a father's sister, that is Ifimoa, and the three kids. And again, what are you able to see? You are able to see that how the crime takes place, how the killing is actually taking place. So that is another important aspect that you are largely able to look at. ठीक है? तो देखो बेसिकली आपको दो तीन चीजें क्या याद रखनी है कि ये जो important works है इनके इन डिटेल जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, व्हेन यू गेट क्वेश्चंस that are coming from inside, they're predominantly asking questions to actually check whether or not you've read the entire thing. Are you able to understand ke kaun hai, who's the one who's actually, papa's the one who's perpetuating violence, right? And then there is Kamli's mother who's submissive altogether. जो पूरा का पूरा आपको पता चलता है the violence that is coming in, right? So please keep all of these terms properly in mind. Which of the following characters is assassinated by the regime in Chinua Achebe's Anthills of Savannah? Anthills of Savannah me, who's the one who's assassinated? Anthills of Savannah me, who's the one who's assassinated? Who's the character who's getting assassinated? Who's the character who's getting assassinated? Again, Anthills of Savannah Kabina, you will have to remember कि कैसे it is taking place in the West African countryside of Kangan, ठीक है? And overall पूरा का पूरा जो डेमोग्राफ देखो please, yes, absolutely right Sonali, very good, very good, very good, absolutely right, absolutely right. Akeem is the right answer. Akeem is the right answer, ठीक है? Akeem is the right answer over here. That is absolutely the right answer. So, Anthills of Savannah by Chinua Achebe, taking place in this imaginary West African country of Kangan, जहाँ पर Sandhurst trained officer identified only as Sam, known for his excellency, has taken power, following a military coup that has taken place. So, a lot of these writings are trying to also expose you that, how they had expected things to become, that is not what actually came. ठीक है? तो ये पॉइंट भी ये लोग रेस करते हैं. Okay, so please keep that in mind. Akeem's girlfriend, Eliva's character who's there. Tensions escalate, culminating in the assassination of Akeem by the regime. Okay, so how people are just trying to overthrow you. In which of the following Nadine Gordimer's novels, a liberal white South African family has to flee to the native village of their black servant. They have to go back. अभी हम लोगों ने कहा था that when we are looking at the adventures of Huckleberry Finn, which begins where Tom Sawyer had ended, where Tom and Huck had got a fortune of $12,000. हम लोगों ने ये बोला भी था. I hope you can remember that. दीक्षा, here when you're making, जैसे आप जब अफ्रीकन लिटरेचर करते हो तो चिनुआ एक्चुअली आप पढ़ते ही हो. जब आप अफ्रीकन लिटरेचर कर रहे हो, यू आर ऑल्सो लुकिंग एट राइटर्स लाइक बेन ओक्री, यू आर ऑल्सो लुकिंग एट राइटर्स लाइक अदीची, राइट? तो आपको, आप जब अफ्रीकन राइटिंग्स कर रहे हो, साउथ अफ्रीकन राइटर्स कौन कौन से हैं? नाइजीरियन, केनियन, बोत्सवानियन राइटर्स, सोमालियन राइटर्स, तो ये सारे आपको करने पड़ेंगे. तो दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर अफ्रीकन लिटरेचर एज वेल. ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. your writings related to African writings, right? African literature से जो writings आपके associated है, ये उसी से ही पूरा का पूरा cover हो रहा है. Okay, what is the correct answer over here? What is the correct answer over here? Yes, what is the correct answer over here? Absolutely right. July's people. July's people is the right answer. July's people is the right answer. So again, July's people set in the near future version where apartheid has ended. Apartheid is the center for most of the South African writings that you're able to see. Okay, and ये जो book है ना, it was banned in South Africa. It was banned, and Godimer is considered to have written most banned works altogether. Fictional civil war से deal कर रहा है. That is another thing. And the story is following the Smalls, liberal white South African family. They were forced to flee Johannesburg to the native village of their black servant July. That is the story. ठीक है, तो ये प्लीज इसको याद रखिएगा थोड़ा सा. अभी भी जब आपका क्लास भी ओवर हो जाए, एक बार थोड़ा सा जस्ट गो ओवर इट. दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. इन जेएम कोटसी's novel Waiting for the Barbarians, what does the magistrate's recurring dream infer? What does the magistrate's recurring dream infer? Apartheid is a state-sponsored racial segregation. Okay, Shabna, what is apartheid? Apartheid is a state-sponsored. जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम was never state-sponsored, but ये क्या है? This is state-sponsored racial segregation. This is state-sponsored racial segregation that we are able to see when we talk about apartheid. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है.
What is the correct answer over here? Again, waiting for barbarians, an important work. At least ये भी जो अभी writers आप देख रहे हो, कोटसी, अदीची, चिनो एचबे, बेन ओकरी, इनको भी अगर आप कर लोगे तो आपका काफी हद तक पोस्ट colonial literature you'll start understanding what are they trying to talk about. So over the weekend इनको cover कीजिए अच्छी तरह से, meticulously try to exhaustively cover them. No worries, Vishnu, no worries at all. So waiting for the barbarians, you are able to see, it's trying to tell you about the relationship between civilized humanity and monstrosity. अभी हम लोगों ने करा था कि कैसे मिस वॉटसन as well as her sister they want to civilize Huck Finn. हम लोग फाउंडेशन बैच में याद है ये पढ़ रहे थे. So that is another thing that you are able to see. So यहाँ पर what is this work actually trying to tell you? What is this work predominantly trying to show you in waiting for the barbarians? What are you able to see? Okay, Coetzee is alleged to have taken the title from this Greek poet Constantine Caffi. ये भी हम लोगों ने करा था याद है. अभी we were talking about कैसे आपका लीव्स ऑफ ग्रास इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम एमर्सन्स द पोएट. हम लोग यही इस चीज को कवर भी कर रहे थे. आई होप यू रिमेंबर. द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल इज द नेमलेस सिविल सर्वेंट हु सर्व्स एज द मैजिस्ट्रेट ऑफ फ्रंटियर सेटलमेंट. ठीक है, that is another thing. And the empire is set in opposition to the barbarians. हम लोगों ने ये भी किया है. Remember हर्बर्ट मेलविल का टाइपी, the first important work कल ही किया था, which is actually criticizing the missionaries, and it's trying to tell you the reality of the missionaries. Throughout the novel, the magistrate has this recurring dream in which he approaches a group of children building a castle out of snow. He gets closer, the children around the castle slowly disperse altogether. That is another thing that you were able to see. Okay, so please keep that in mind. Please remember that altogether. Okay, the barbarian girl, magistrate begins seeing the barbarian girl intimately. Okay, so पूरा का पूरा जो चीज आपको दिखाया जाता है civilized and civilization and monstrosity के definitions को redefine कर रहे हैं ये सारे works. ठीक है, they again this is the most important post colonial theme, right? That it's not the natives who are barbaric, it's not the natives who are barbaric, right? It's not the natives who are barbaric, it's actually the colonizers. That is what you're able to see. No work or no question practice on post-colonial literature is ever complete without discussing about, Volshoinka, right? Volshoinka again, because he's the first important African to get the Nobel Prize altogether. That is what you're able to see. So sorry. What becomes the correct answer here? Jaldi se bataiye. What is the right answer over here? What is the name of the lion in Lion and the Jewel? What is the name of the lion in Lion and Jewel? Very good, very good. Absolutely right, Baroka. ठीक है, absolutely correct, absolutely correct. So Lion and the Jewel again, very important work by again the Nigerian writer Shoinka. It is telling you how Baroka the lion, right? Baroka is the lion, fights with the modern Lacunan because he wants to get married to Sidi. The concept of bride price ये बहुत बार आता है आपका. देखो जैसे अभी भी a lot of times ये आप न्यूज में भी देख रहे थे, ट्रेंड कर रहा था लास्ट वीक. आई थिंक लास्ट वीक अराउंड द सेम टाइम इन सानिया मिर्जा का डिवोर्स के वो आ रहा था, तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ तलाक एंड अ खुला. That in khula it's more respectful for a woman. Why? Because the woman is returning the amount, so to say, the meher which was given back. तो काफी सारी सोसाइटीज में आप देखते हो that the bride price as a part of marriage is there in multiple customs. So that is something that comes across over here as well, right? So the titular Jewel Lacunal is portrayed as the civilized antithesis of Baroka altogether. Modernity and tradition, इनका जो clash चल रहा है वो आपको पता ही चलता है. ठीक है, सो रैपिड मॉडर्नाइजेशन, ये रैपिड मॉडर्नाइजेशन थिंग्स फॉल अपार्ट, वेस्ट एंड ईस्ट का जो इनकाउंटर है, ये ईस्ट वेस्ट का जो इनकाउंटर है, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्निज्म है, ये तो हर एक राइटर आपका बोल रहा है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. Which of the following plays by Volshwenka is based on the impact of ancestral spirit on the larger social political environment of Nigeria in an early post-independence time? In the early post-independence time, what is the correct answer over here? In the early post-independence time. In the early post-independence time. What is the correct answer over here? What is the correct answer over here? Fatima,
इट्स नॉट अबाउट इन डेप्थ, वही मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप लोगों का सबसे पहले तो स्केलेटन ठीक कीजिए। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज है दैट देयर आर मल्टीपल लेवल्स। क्या आपको समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कौन सा राइटर फ्रेंच है, जर्मन है, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियन है? सबसे पहले आप अपना स्केलेटन ठीक कीजिए, जिसको 1-2 महीने लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन डिटेल जाएंगे, थोड़ा सा आपको रिकलेक्शन होगा। इट इज नॉट कि आपको टोटल बुक पढ़नी है, ठीक है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना स्टोरीज की, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आप देख पा रहे हो, दिस इज डांस ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, दिस इज डांस ऑफ द फॉरेस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, डांस ऑफ द फॉरेस्ट। आई कुड सी सम ऑफ यू सीइंग ए आल्सो, दिस इज डांस ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो वॉर शोइंका का लाइन इन द ज्वेल के बाद डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इट वाज परफॉर्म ड्यूरिंग नाइजीरियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। नाइजीरिया में आपका जो बायाफ्रन वॉर है, दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट वॉर, बायाफ्रन वॉर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स का के बारे में बता रहा है, राइट। इट्स ट्राइंग टू ओवरऑल फोकस ऑन दैट, सो योर पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम्स आर आल्सो गेटिंग कैप्चर्ड। यूरोबा ट्राइबल एथनिक ग्रुप आपकी आ रही है, राइट। सो दैट ऑफ कोर्स इज देयर। अगेन, Ola Rotimi's, the gods are not to blame. The gods are not to blame is an adaptation of which Greek tragedy? This is an adaptation of which Greek tragedy? This is an adaptation of which Greek tragedy? ये जो 1971 novel है, this is actually, the gods are not to blame. This is an adaptation of which one? The story is centering around Udevale. Udevale is there. Yes, absolutely right, Zamar. Oedipus Rex is the right answer. Oedipus Rex is absolutely the right answer. So the gods are not to blame. The gods are not to blame by Ola Rotami. What are you able to see? ये स्टोरी है उडेवाला के ऊपर। इट सेंटर्स अराउंड ल्योर्ड बाय फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, ओनली टू समहाउ गेट कॉट अप इन द consanguineous trials that are taking place, ठीक है। So please keep that in mind when you talk about consanguinity in the same family. Consanguinity is the same family. That is what we are talking about. Which of the following African playwright is concerned with the ritual suicide of Yoruba king horsemen? Very simple. Yoruba King Horseman. Yoruba King Horseman. Yoruba King Horseman. Death and the King's Horseman किसने लिखा है? Who has written Death and the King's Horseman? Who is writing Death and the King's Horseman? Very good, Dominator Rajneesh. Death and the King's Horseman. Wolf Shoinka ने लिखा है. So Death and the King's Horseman by Wolf Shoinka, real life incident in Nigeria during colonial times. Horseman of Yoruba King. He prevented from committing ritual suicide by colonial authority. Basically क्या करते थे वो किंग के साथ ना उसके हॉर्स को भी they would actually bury. So that was stopped by colonial authorities. That was stopped by the colonial authorities. This ritual was actually stopped altogether. एनिमल स्टडीज में भी ये वर्क डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन को बताया जाता है. That is what you are able to see. So according to Yoruba tradition, death of the king must be followed by the ritual suicide of the king's horsemen, okay, as well as the king's dogs and horse, because the horseman's spirit is essential. वही आपके किंग को लेके जाएंगे. मतलब किंग की डेथ हो गई है तो किंग अगर he has to go to the other world, he has to be carried over. So that is what they actually believed. Now who knows again. आपने ये भी देखा होगा, Tutankhamun. So discovering Tut, the saga continues. A lot of people have talked about it. Tut का जो unearthing था, how scared the person was that Tut's spirit will actually come back. The poetry collection Down to My Last Skin belongs to which of the following South African poets? Down to My Last Skin, Down to My Last Skin, Down to My Last Skin, Down to My Last Skin किससे associated है? Down to My Last Skin, Down to My Last Skin, very important, very important. This is associated with Down to the Down to My Last Skin. No, 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 no. No, this is so again, ये सारी चीजें थोड़ा सा और ध्यान दीजिए. इवन अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं when you're writing, that's the reason we say you should also write a lot of these papers. So this is Krog who's writing it. आप लोगों में से first few answers तो बिल्कुल रॉय कैम्पबेल वगैरह नहीं है. It is T.G.A. Krog. Krog is writing. So down to my last skin. This is the first collection by Krog's poetry to appear in English, right? It cements his reputation as one of South Africa's greatest poets.
altogether. Krog is considered to be a very important poet. तो African poetry के अंदर Krog का नाम, you should definitely write. We started with Orient, Under Orient by K.K.N. Daruwala, the Indian poet, but we're actually moving full circle by talking about Krog, right? By talking about Krog altogether. तो ये please याद रखिएगा. And this is the first collection of Krog's poetry that was there. It cemented his reputation overall as well. What is the previous South African president Nelson Mandela's autobiography called? What is his 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 autobiography called? Very good, Diksha. Absolutely right. Long Walk to Freedom, and it was, right? It was the longest walk, rather. Long Walk to Freedom altogether, first published in 1994, telling you the early life, coming of age altogether, apartheid government के बारे में भी बताया जाता है, right? That is what you're able to see. And, again, becomes a very important work that you're able to look at, okay? So, Long Walk to Freedom, that is coming in, right? Long Walk to Freedom that you're able to see. Okay, Mandela is describing his upbringing as a child and adolescent, right? At the Thembu dynasty, ये पूरा का पूरा आपको बताया जाता है, whatever he had experienced. Okay, one of the last few questions. Country of My Skull, South African non-fictional work, was published when? सबसे पहले तो ये बताइए, कंट्री ऑफ माई स्कल लिखा किसने है? कंट्री ऑफ माई स्कल अभी अभी मैंने आपको जो बताया है, इंपॉर्टेंट साउथ अफ्रीकन पोएट, कंट्री ऑफ माई स्कल. We just now saw Down to My Last Skin was written by T.J. Krog, and this is the similar work that you are able to see. So Country of My Skull कहाँ पे आ रहा है? Country of My Skull Krog का वर्क है, ठीक है? तो क्रॉग के दो वर्क सब आपको आज पता चल गए हैं. आपको साउथ अफ्रीकन पोएट क्रॉग भी याद रहेगा. क्रॉग के दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रही हूँ. TRC, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन. ये क्या कमीशन थी? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन. बेसिकली अपार्थीड के बाद आपका ये थोड़ा सा ना, ये कॉन्सेप्ट आप समझ भी लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए समझना, ठीक है? ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. दिस वर्क वाज कमिंग इन 1998. बेसिकली आपका नेल्सन मंडेला, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो लिख रहे हैं, नेल्सन मंडेला's idea was to completely get away with apartheid, race, state sponsored racial segregation, white की जगह ये है, black की जगह ये है. To get done with that, and what they wanted to introduce the rainbow nation, people of all colors living together. तो ये वो rainbow nation लेके आना चाहते थे. लेकिन after apartheid, a lot of blacks were they were not happy. They were like हमारे इतना ज्यादा हमें oppress किया गया है. They were not at all happy. तो इसीलिए ना TRC, Truth and Reconciliation Commission start किया था. Truth and Reconciliation Commission क्या करती थी? They would actually take apologies from the white community for perpetuating violence against the black. अब आप बताओ, आपने मेरे 200 साल खराब कर दिए, आपने मेरे पे generational हमला किया है, आपने मेरी कितनी सारी जनरेशन को हार्म किया है, और आप सिर्फ मुझे एक अपॉलॉजी लेटर लिख देंगे, तो विल दैट बी इनफ? So a lot of people were not happy with this. At all. So Truth and Reconciliation Commission आपको ये याद रखना पड़ेगा. So Country of My Skull, 1998 non-fictional book by Krog. Krog is actually writing this, trying to tell you about the Truth and Reconciliation Commission. ये पूरा का पूरा, right? That is what you were able to see. So please keep that in mind. Who's the protagonist of Mape's Welcome to Our Hill Bro? Welcome to Our Hill Bro. Mape's Welcome to Our Hill Bro. So when we are talking about Mape's Welcome to Our Hill Bro, this is the last work that we have for today. Again, a very important South African novelist that we're talking about, Paswani Mape, telling you about xenophobia, tradition, multiple other things that you're able to see. What is the correct answer over here? Very good. Diksha has got the right answer. The main character आपका जो है, right? When we are looking at the protagonist, it's Refenste. Refenste is the main protagonist of Mape's work. So Korg, Mape, ये please एक बार दोबारा से कीजिएगा. Welcome to Hillbrow जो है, it is by South African novelist Mape, which is dealing with themes like AIDS, xenophobia, inner city status altogether. Post apartheid Johannesburg के अंदर है.
रफेन स्टेट इज द मेन कैरेक्टर, रफेन स्टेट मोरो जो है that is your main character who goes through many hardships due to hectic Johannesburg society where he lives. You know, he's a professor who's in love with this woman called Larita, right? Larita is in love with it, and one day he comes home to find his best friend Sammy and Larita, mutually love making, and he of course commits suicide by jumping off the building. So that is another important thing that you're able to see. So welcome to our Hillbro by Mape, right? Mape is the one. So Mape, Korg, I really want all of you to please review all of these writers. Again for post-colonial literature, like I said, ये आज जो class हुई है इसमें आप अपने थोड़ा सा post-colonial writings को compile कर लीजिएगा और वो link मैं आपको ना भेज दूंगी वो पूरा का पूरा MPPCS. Next, next week हम लोग we will be looking at your December 2023 UGC NET paper as well. ठीक है और साथ में if you want us to help you out with any other topic, please feel free to let me know on neerja.raheja@neerja.raheja.faculty@testbook.com, right, @testbook.com. Please मेरे को एक बार आप बता दीजिएगा because we are accordingly preparing the schedule also. It's better to help you out with the focus things all together, right? So I'll catch up with all of you tomorrow. कल भी आपके मास्टर क्लास है 26 को 12 बजे और 1 बजे. मैं टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगी आपको और बाकी ऑफ कोर्स आपका जो 21 तक मास्टर क्लास का स्केड्यूल है वो ये आपका है ही है, ठीक है. So please ensure कीजिएगा that all of you are reviewing. Thank you so much. Thanks so much. देवशीष, माया, सोनाली, मैंने एक आप लोगों का भेजा ही हुआ है तो एक बार उसको आप देख ही लीजिएगा, ठीक है. Right. Very nice, Dominator. Very good. अफ्रीकन एंड कैनेडियन राइटर्स पे ये सारे के सारे एक बार ना वर्ल्ड लिटरेचर मैंने एक वो भी बनाया है वीडियो अबाउट अ बुक रिकमेंडेशन फॉर दिस, सो यू कैन टेक अ लुक एट इट. फाइन. Thank you everyone. In case if there are any other questions, any other doubts, please feel free to let me know. I'll catch up with all of you next week. And of course, we're meeting tomorrow as well. We're meeting tomorrow at 12 o'clock and 1 o'clock for your master class. ठीक है? Link आपको Telegram पे मिल जाएगा. Thank you, Anjali. Take good care of yourselves. Good night, everyone. Sweet dreams. Take care. Bye. Please remember all the things down to my skin, Krog, Mape, the entire thing.